Between 1970 and 2000, over 4 million non-Adivasi people migrated to Jharkhand, mostly from Bihar and Uttar Pradesh. Over the same period, around 4 million Adivasis left Jharkhand to work as wage laborers all over India. Going by the census of 2001, the Adivasis had become only 26% of the population. Sale of Adivasi land to non-Adivasis had been forbidden by the British and remains prohibited under the 5th schedule of India's constitution. Yet, in the 14 scheduled area districts of Jharkhand, the transferring out of Adivasi land is commonplace. It is not uncommon for an Adivasi to spend a lifetime locked in litigation over inherited land. हमारे आजा लोग आज बटाई में दिया था कोयरी महतो को, विजय कोयरी, रुदन कोयरी को दोस्ती बना के आज बटाई में दिया। तो यही लटर पटर करके दिक्कू लोग उसको क्या किया क्या नहीं ये हम लोग को पता नहीं। लीलाम बनाया तो सिलेंडर बनाया और उसको कब्जा किया है पैसा दे करके। तो मूड़ा कोर्ट में हमारा ज़मीन आपस हो गया, तो दखल मिल गया हमको। दखल मिलने के बाद एसआर किया अपील, एसआर में भी हार गया। उसके बाद कमिश्नर किया अपील, उसमें भी हार गया। उसके बाद ने हमको अब इधर पता हो गया तो हम लड़ना छोड़ दिया। फिर कहीं अपील किया कि क्या किया उसका पता नहीं है। तो हम खेती कर रहे हैं आराम से, हमको कोई मतलब नहीं है। जब हाई कोर्ट से हमको जो पता चला कि तुम तो ज़मीन हार गया, तो अरे कहाँ नियम पर हम हारे, वहाँ तो हम कैसे नहीं लड़े हैं और कैसे ज़मीन पर हम हारे। $100 years of change has resulted in 2 Jharkhands. Chas, a boom town that grew on the heels of Bokaro Steel, epitomizes the change. A once sleepy village market is now a fast-growing center of business and manufacture. For the people of Chas, Adivasi Jharkhand hardly exists. They built the Jharkhand they live in. A business elder, Kamal Kakkar, began life as a small contractor when Bokaro Steel was being built. Today, his sons run the family business. Chas is now home to 3 generations of the Kakkars. A minority in their own state, power in Ranchi is outside the Adivasis' grasp. Even in the scheduled areas, more and more Adivasi assets slip out of their control every day. Their last hope is to organize and assert the power of their customary village councils, the Gram Sabhas. India's constitution vests ownership of Adivasi land and environment in the wisdom of their traditional village institutions.
Rotisnya talben kapajiya ben. Pro anyo kain kapaji. The world recognizes the urgent need to empower village-based management of natural resources as one of the last hopes of mankind in this planet. The final irony of statehood is that the Adivasis' historic fight did not bring them power. Salt to their wound is that national political parties which always opposed a separate state run Jharkhand today. दुर्भाग्य कहिए इस राज्य का कि वो ठेठ झारखंडी राज समाज की इच्छाओं की जो विरोधी सामाजिक शक्तियों को नेतृत्व देने वाली भाजपा थी, हुकूमत में वो आसीन हुई। इसलिए इस हुकूमत के जरिए उन सपनों के फलने फूलने की उम्मीदें पालने का तो कोई सवाल ही नहीं। A Jharkhand dedicated to protecting and promoting the Adivasis' cause, the Jharkhand of 70 years of Adivasi struggle is not on the agenda. आदिवासी 28% है, गैर आदिवासियों की संख्या 70%, 72% है, हरिजन 12% है। सबकी अपनी एक अहम अवस्था है। यदि सबको अलग अलग विचार करने वाले लीडरशिप जिस प्रकार से कोशिश करता है काम करने के लिए, यदि वह सफल हुआ तो राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। During the first 5 years of the new state, more than half of its developmental budget remained unspent. हम इसीलिए मानते हैं यहाँ पर कि हमारा अधिकार को छीना जा रहा है, क्योंकि आज जितना भी प्रशासनिक से लेकर के तमाम चीज़ में, या ठेकेदारी हो या बिजनेस हो या व्यवसाय हो या बस परमिट, जो भी चीज़ हैं, उन तमाम चीज़ों में यहाँ पर झारखंडी लोगों का उसमें कहीं भी उनका हिस्सा नहीं है। बाहरी लोगों का ही उस पर अधिकार है। आदिवासी को आगे कर दिया है कि आदिवासी का हम विकास चाहते। क्या विकास आप करते हैं? एक चौकीदार की भी नौकरी आप किसी आदिवासी को दिला नहीं पाए, एक गैर आदिवासी का नौकरी आप लूट नहीं सके, और उल्टे आपने मारकाट मचवा दिया। और मारकाट मचवाने में आदिवासी लोग भी मारा, गैर आदिवासी भी मारा। अभी भी बिहार में जैसा स्थिति था, अभी भी झारखंड में भी वैसा ही स्थिति है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं उसको इंटरनल कॉलोनियलिज्म जैसा स्थिति यहाँ पर, आंतरिक उपनिवेशवाद यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि सिस्टम तो वही है। Bitter divisions have separated the two Jharkhands ever since statehood. ये पहला ऐसा घेराव है जिस घेराव में राजनीतिक दल भी हैं, सामाजिक संगठन भी हैं, जन संगठन भी हैं, छात्र संगठन भी हैं। अगर हम सारी ताकतें इस ख्याल के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो 70 वर्षों से जो लड़ाई चली थी अलग राज की, उन सपनों को हम पूरा नहीं कर सकते। The government's move to amend the Chotanagpur and Santhal Parganas Tenancy Act, the bedrock of Adivasi land rights, raised tensions. हम सबसे पहले बोले था साला पकवास है, पकवास लोगों को लड़ाने के लिए बात कर रहा है। अरे नौकरी देना है तो सीधा सीधी तेरा हाथ पकड़ेगा कोई क्या? डोमिसाइल बोल के झारखंड का सिपाही को बहाल करने के लिए डोमिसाइल, और डोमिसाइल में लिखता क्या था? एक हाथ कट गया 50 ब्लॉक में, एक किराने का 500 टका लेता था, 10 साल का सर्टिफिकेट आवासीय। ये डोमिसाइल है क्या? आवासीय। The criteria for reservation in state employment for natives of the state pitted the Adivasis, Moolvasis, and later immigrants against each other. Adivasi organizations have boycotted and stalled recruitment of teachers by the state government.
With civil society in conflict, development at a standstill, and rural poverty on the rise, Maoist forces have repeatedly struck at the government, paralyzing administration in several districts. The murder of Mahendra Singh just before the state elections of 2005 was a calculated blow to the people's movements in Jharkhand. There is violence at the very core of Jharkhand's politics. If there is one factor that has made Jharkhand what it is today, it is the nationalization of the coal industry in 1972. In the so-called coal belt, straddling 8 major districts of the state, there were now 2 different but overlapping spheres of authority: the Bihar state government and the central government coal corporations. Inevitably, the grey zone of this dual authority gave rise to a third entity: organized corruption between public sector coal companies and the licensed private coal trade. In its heyday, the country's single largest generator of black money. Suraj Dev Singh is still remembered as the first Don of the coal belt. His statue presides over the coal market of Jharia, the historic coal town. The ex-Prime Minister who unveiled it is just one sign of coal's influence in national politics. Coal money dominates the politics of the state. Jharia, the country's largest coal trading center, is a disturbing symbol of the coal industry. Around the town, an underground mine fire has been burning for over 20 years, uncontrolled. It has now reached the outskirts of the town. Jharia's outlying shanty towns, home to the poor, have begun to crumble. पैर नहीं रख सकते हैं, किसी का भी घर में आप जाइए यहाँ बस्ती में, पैर नहीं रख सकते हैं, इतना गर्म है। 10 मिनट आप खड़ा एक जगह हो नहीं सकते हैं, तो चारपाई पे अपना बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं किसी तरह। कभी बिजली रहता है तो वही पंखा चला के अपना गर्म हवा हो या ठंडा हवा हो, किसी तरह गुजारा चल रहा है सभी का। But it is life as usual in Jharia. The coal belt is a tragic document of state-sponsored ecocide, where you see a total devastation of Adivasi habitat and livelihood. Ecological resources are degraded. The agrarian economy of an entire region is crippled. In its most fundamental impact on the filial bonds of Adivasi society, coal has devastated the world of the Adivasi woman. From being a co-sharer and partner in Adivasi society and economy, she became a coolie in a grey labour market, a commodity of the labour suppliers. Her family wrenched from its roots.
Salgatola is a typical Santhal village of the coal belt. The villagers lost their lands and their habitat to government coal mines. Along with women from other areas, women of Salgatola go to work in the brick kilns that have sprouted all over this burnt-out terrain. On January 14, 2001, Phagni Murmu, a young woman from Salgatola, came to this kiln to collect her wages. 19-year-old Phagni was married to Mago Tudu, a coal mine employee. She was 3 months pregnant. That night, Phagni Murmu did not come home. She was raped and murdered, almost surely at the brick kiln. Her body was carried to the top of a large mound of soil and rock from the open cast mines and dumped there. वही ठेकेदार सब वही कोनी मतलब खाना बना को करते ना मतलब मीट मुर्गा को बना के दा वही मतलब दारू को न्यू के दांडे को ठेकेदार मालिक सब उनको जानते माखोले बड़ा के दा कहीं को थालना आर की जगह तो वही बट्ठा पर से आते आते देखते आए कि चिन्ह नमूना बोले देखिए यहाँ से ये चूड़ी फुटा हुआ है, यहाँ से देखिए खून चुआ है, यहाँ से ये खून को पीछे किया जाए कहाँ तक गया है। तो वो पीछे करते करते गया, आए हम लोग जहाँ लस था वहाँ था। तो इसी का लस से देखिए मंदिर उधरे हुआ कि इधरे हुआ, लेकिन खून उधरे से गिरते आया है जहाँ लस पड़ा हुआ था। हम लोग तो जितना जन आंदोलन जो करना था समाज के स्तर से हो, पार्टी के स्तर से, हमने किया उस चीज़ को, लेकिन पैसा के बल पे प्रशासन को खरीद लिया गया। अब पैसा के बल से प्रशासन को खरीद लिया जाए तो एक आदिवासी को न्याय कहाँ से मिल सकता है? तो बहुत सोचने वाली बात है। In the year 2000, 82 instances of rape were reported to the police stations of this region. 7 years later, not one had resulted in punishment. बारह 13 साल रहे शादी हुई नहीं तली है, 3 साल को तान न पहले 3 वर्ष ले तान करते ना उन्हीं बने का से मान के बांग्ला As long as industrial considerations remain India's dominant interest in Jharkhand, little can change for the Adivasi. 50% of India's oil is imported. 70% of Indian industry's fuel is coal. 37% of India's coal and 23% iron is from Jharkhand. Even today, a global steel boom wants more iron and more coal. Heavy industry, runaway urbanization, and poor governance make a bitter brew. How will the Adivasis save their world from extinction?
90 kilometers from Ranchi, the Karo River sweeps through a fertile valley of centuries-old tribal villages. In 1983, the Bihar government, with NHPC, the National Hydroelectric Power Corporation, started work on a 724 megawatt Koil Karo power project. This bridge was the first vital step to building the dam. If the dam were built, 112 villages would disappear. Over 7,000 households would lose their land and livelihood. But the dam could not be built. Across the project area, villages joined together in a struggle of non-violent obstruction of project vehicles and brought the Koil Karo project to a halt. But with statehood, the new Jharkhand government and NHPC restarted the project. This time, the stopping of police vehicles was met by firing at Tapkara on the 2nd of February 2001, killing 8 protesters. Every year on that day, hundreds gather, some from far away, in an act of solidarity and a pledge to sacrifice. Little known, locally organized and led, the Koil Karo movement has shown the way to a new path of Adivasi resistance. The organized assertion of Adivasi control over Adivasi environment. आज़ाद भारत की ये पहली घटना है। ये इस देश के लोगों को भी समझना होगा, झारखंड के लोगों को भी, कि तपकारा थाने में घिराव हुआ, गोली चली, भयानक जन असंतोष हुआ। आज तक तपकारा थाना फिर से बहाल नहीं हुआ। इस चीज को अगर आप नहीं समझेंगे तो यहां प्रतिवाद की क्षमता और इस क्षमता के कारण सरकार के खौफ को आप नहीं समझ सकेंगे। Through the 80s, the spirit of Koil Karo had spread. In the 90s, the Bihar government moved to take over 1,471 square kilometers of land near Netarhat to serve as the field firing range for the Indian Army's heavy artillery. People from the 245 villages that were to be displaced united to resist the army and stopped Indian Army convoys from entering the notified area. Once more, self-organized, beyond the reach of the political parties. इसको तो पहले से सोचा समझा गया एक षड्यंत्र है कि माने जहाँ जहाँ आदिवासी लोग का ज़्यादा बेल्ट है वहाँ वहाँ बड़ा बड़ा परियोजना बना के उसको भी स्थापन करना, लोगों को हटाना, उसकी संस्कृति समाज को ख़त्म कर देना, यही तो एक षड्यंत्र है इनका। Worship of nature is the essence of Adivasi culture.
In the festival of Sarhul, they celebrate the blossoming of the sal flower.